So, any problem with the yesterday's lecture? You were able to write, understand, speed, anything? Speed was the issue, or you have not understood? Both. So, good. So, you have to stop then and there, because, and again, all of you will have to maintain the continuity. If you will miss one topic, maybe it will impact many other topics, because the subject is very integrated subject. Fine. So God knows when I will teach which topic, because whatever will come in the flow, I will teach. Okay. And if you are not understanding, just let me know then and there itself. So yesterday, what we were discussing was actually the most important part of the syllabus of political science, and that is वर्ल्ड ऑर्डर. मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड ऑर्डर. ये चेंज नहीं हो रहा है, और मैक्सिमम लॉट ऑफ आर्टिकल्स कीप ऑन कमिंग ऑन वर्ल्ड ऑर्डर. ओके, अच्छा. सो I was just opening the syllabus, and the syllabus was changing international political order. So, if I am discussing changing international political order, am I discussing economic order? Which order I am discussing? Political order. So, am I dealing with geoeconomics or geopolitics? Geopolitics का ये topic है. And what do we discuss in geopolitics? Power, struggle for power. Some of the frequently used terms in geopolitics are balance of power, hegemony. So what we are going to discuss? Geopolitics, evolution of politics. ये वाला part of IR में we will be discussing wars, cold wars, ऐसी चीजें. ठीक है? And changing. If you have to see changing, you have to see evolution. What was earlier, what changed, how changed, why changed, what is the direction of the change. So we will have to take which view? Historical view. तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया? फ्रॉम इंटरनेशनल समझा. तो इंटरनेशनल का स्टार्ट ही कहां से हुआ? ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया. तो व्हाट केम? नेशन स्टेट्स. तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नेशन स्टेट एंड कंपेयर्ड विथ सिविलाइजेशन स्टेट्स. और तो हमने वैसे ही कुछ नहीं किया. तो वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग. So what was the initial world order? It was not world order, it was European order. Fine, and that we were discussing. कुछ आया समझ में? Have you understood anything? IR, no one can understand until and unless that person read newspaper. ठीक है? Because the language of IR is in the articles of the paper. And you should be aware what is happening, what people are talking about. Even Sri Ram Cholia sir's show comes in DD News.
I think India's diplomacy, if you are very beginner, then that is also a very good show. फाइन, आप कहीं से कनेक्ट होना स्टार्ट करेंगे IR, एनीथिंग दैट यू स्टडी you will do well when you will make it part of your life. If you will just study as a subject and coverage, तो वो आएगा ही नहीं. You have to have interest, familiarity, and it should be part of your daily life. At least कुछ नहीं तो इंडियन डिप्लोमेसी का ही सुनना स्टार्ट करो, तो धीरे से थीम समझ में आएंगे. हाउ स्कॉलर्स, एक्सपर्ट्स, एम्बेसडर्स, what type of language they use. ओके, तो इतनी चीजों में एक सारे वर्ड्स आप बता सकते हैं. एंड नाउ वी विल डिस्कस evolution of that order because our topic is changing. So we have to see from where to where and what are the phases, and you can either discuss evolution of an order through conception of polarity or through the conception of the norms. So there are two ways word orders are being discussed. More important, if you see articles at present, more number of articles, speeches, they deal with future of liberal order. So it is more important to discuss in normative sense. It is not of big help if we discuss world order is bipolar, multipolar, etc. ठीक है, तो ज्यादा डीपर लेवल पे कौन सा होता है, नॉर्मेटिव, और हमको दोनों समझना है. एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज. What is the term used for this word order? What is the term used for this word order? Fine. So yesterday I gave you one question and I also given you initial approach that if we will do word order, how will you proceed? So what is word order? It can be discussed in two ways. ऐसा कुछ लिखा था ना हमने, ठीक है. तो अब let us come to the point and understand the changing international political order. Fine. So, and why do we need to understand world order? That is also important. Why do we need to understand world order? Why this topic is so important? Because any country's foreign policy has to be in accordance to the world order. So ultimately we have to make foreign policy of India. So my foreign policy of India cannot be simply what India wants, because India is not the only country in the world. There are other countries, and how order is formed when we interact with each other. A order will come, a norm will come. For example, after 5-10 days, you will understand what is the order in the class. What is the norm in the class? How you are supposed to behave? What type of teacher I am? And then a order will get set up. Order comes into existence through interaction. So when we will interact with each other, you will get to know what I expect from you. And I will also get to know what this class expect. इस क्लास के बच्चे कैसे हैं, इनका माइंड कैसा है, तो हम एक दूसरे को समझेंगे. If I will not, an order is important for both of us.
Okay, so you all are creating order for me, and I am also creating order. So if I have to decide the policy key in this class, what will be the way I will teach? So that will depend upon the interactions we will have. I will understand mindset, level of understanding. Accordingly, I will go. So why should any country? Ultimately, I have to study, I have to develop, I have to contribute. If you become IFS, you have to contribute in India's foreign policy. But foreign policy is never made in vacuum. Fine. So we have to make choices in a given circumstance. There is a structure, there is a order. For example, when India became independent, it was Cold War, it was bipolar, and we opted for non-alignment. Then the world became global, and from non-alignment, our policy became non-alignment 2.0, and that is multiple alignment. When it was the order of US hegemony, that time our policy was asserting strategic autonomy. Fine. So why should we study world order? Why should we study? Because no country live in vacuum. My foreign policy will be in response to the world order. I have to preserve my interest. I have to protect myself. तो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उस दुनिया की खबर के बिना हम कैसे बिहेव करें, हम ये नहीं डिसाइड कर सकते. तो अब तो समझे वर्ल्ड ऑर्डर क्यों पढ़ रहे हैं. जब वर्ल्ड ऑर्डर पढ़ेंगे तो फॉरेन पॉलिसी के फाउंडेशन समझेंगे. तो फॉरेन पॉलिसी वाले भी एरिया में देयर विल बी अ टॉपिक कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. तो दोनों को सिंक्रोनाइज करके पढ़ना है. ठीक है. तो अब हम आ रहे हैं समझने चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर एंड व्हाट हैज बीन द कैरेक्टरिस्टिक. चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर. तो चेंज में we will start, or we can divide this change into different phases. And we will point out the characteristic feature of each phase. Then we will try to give a name to that phase. Plus, we will also understand why this phase changed, where it changed, and this trend analysis will help us to analyze the future prospects, future possibility. We are moving towards which order? When new world order will emerge. Normally, what happens? World order is changing. So, what are the reasons scholars are writing such articles? So, normally you will find there is a pattern that world order changes out of wars. So, since Ukraine war, more and more scholars are writing about it. World order is changing. World order changes when power dynamics change. Fine. So, when new powers emerge, old powers decline. So, world order changed from Pax Britannica to Pax Americana. So, what we see, fall of Britain as well as France, and
it was stamped that Britain is no more a power in 1956 during Suez crisis, because what determined the outcome of these crises was US and USSR. So rise of new power. Also, because of economic shifts which happen. So before 18th century industrial revolution or even 17th century, India, China together formed the first world. India and China's combined GDP was more than 50% of the total world's GDP. And then Britain's GDP acquired that position. And what is predicted in future, that by 2050, the 50% of the global GDP will be from Asia or from BRICS countries. And there will be the decline of the share of G7 countries. Okay, so these are the things. Economic changes bring change. Power changes will bring change. Wars will bring change. Technological developments will change. So why are we studying changing international political order? What is expected from us to know? First thing, for adjustments in our foreign policy. The second thing is, anybody studying international relations should be in a position to make futuristic assessments. It's not that things change and then we change. Before things change, we should start adaptation in our foreign policy. So for that, we need an understanding. When change happens, what is the pattern? Is something similar happening? And where will be the change? Will change be similar to what happened in 18th century, or it is not same? Because rise of India and China is, despite India and China may become the two leading economies, China already is, India has to. And it is said that in time to come, India will surpass US. But that is in purchasing power parity terms, not in terms of quality of life, not in terms of technological growth. And is there a obvious limitations on the technological growth or any economic growth because of the climate change? Fine. So our rise will not be exactly the photocopy of the rise of Britain or rise of US. And then in Asia, like what you see, it is much bigger, more diverse, more animosities are there. The story of rise of USA is quite comforting, because there is no power in American continent to counter power of USA. But it is not so easy either for India or China. So what you have to do, pattern analysis. ठीक है, तो हम क्यों पढ़ने वाले ये तो समझ में आया. पढ़ के हम क्या बन जाएंगे? एनालिस्ट. तुम भी एक आर्टिकल लिख सकते हो स्टेट क्राफ्ट में, अगर लिख पाए. सोचना ये है कि ये इसलिए हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो पैटर्न एनालिसिस कर रहे हैं. तो अब हम आ रहे हैं डिफरेंट फेजेस में. दिस इज एट योर कन्वीनियंस. ऐसा कुछ नहीं है कि हर इंसान यही फेज बताए, बट अकॉर्डिंग टू मी. तो आई विल डिवाइड. I see one pattern. First phase, from 1648, Treaty of Westphalia, till First World War.
Fine. And then the second phase or flux, when we will see old order breaking down. And old order is what? European order. Fine. Breaking down and rise of USA. फाइन. तो ये फ्लक्स सिनेरियो है और आप देखेंगे कि आज का टाइम यही सिनेरियो है. आज के टाइम में हम ये नहीं कह सकते चाइना का राइज हो गया, इकोनॉमिक डिप्रेशन, ये सारी चीजें, और आज का पैटर्न बहुत सेम लगेगा. ठीक है. तो ये फ्लक्स है. फ्लक्स का मतलब हो गया इंटर वॉर पीरियड. बहुत सारे अपहीवल्स हैं, राइज ऑफ फैसिज्म है, कम्युनिज्म है. फाइन. देन द थर्ड फेज, that is since the end of Second World War. This will further be divided into different phases till 1991, which is called as Cold War or bipolar. This will help us in understanding the rise and fall of superpowers, what leads to collapse of superpowers. Fine. Then fourth phase, that is from 1991 till 2001. ठीक है. It is a phase, this is called as unipolar movement. If US hegemony reached to its highest point, this was the point, the age of US hegemony at its best. So this experiment also help us to understand what are the possible consequences of unipolar world. And in future, if unipolar world comes again, how can a country prepare itself? Okay. And then the fifth phase from 2001 onwards. Fine. So first of all, September 11 incident on World Trade Center, and this is ideological challenge to US hegemony. आइडियोलॉजिकल चैलेंज, ये सब तो तुम लोग को पता है. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहाँ है? नेहरू प्लेस है. कहाँ है? न्यूयॉर्क. मतलब इतना तो पता है. शायद तुम लोग पैदा नहीं हुए होगे उस समय, लेकिन हम लोगों ने अपनी आंखों से सब देखा है ये. फाइन. तो हम लोग को कुछ लगता नहीं, हो सकता है इस जनरेशन में ना भी पता हो. तो अब ये क्या है? आइडियोलॉजिकल चैलेंज है. तो आइडियोलॉजिकल चैलेंज कौन सा? इसको कहते हैं राइज ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम. चैलेंजिंग व्हाट? चैलेंजिंग
यूएस, यूएस क्या है? चैलेंजिंग का मतलब हो गया कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म को चैलेंज करना क्या गलत बात कि सही बात? ठीक है, लेकिन इसको ऐसे बताया नहीं जाता है। ठीक है, तो इट इज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सिंबल किस चीज का है? कैपिटलिज्म का है। तो राइज ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम चैलेंजिंग अमेरिका। अमेरिका क्या है? चैलेंजिंग अमेरिका मींस चैलेंजिंग कैपिटलिज्म। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइटेड एंड दे रिस्पॉन्डेड in the form of global war on terrorism। ठीक है, तो इसको तुरंत इसको एक ब्रांडिंग कर दी गई, ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म। ठीक है, ये आइडियोलॉजिकल चैलेंज है कैपिटलिज्म को। और कैपिटलिज्म क्या है? वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन को चैलेंज है। फर्स्ट राइज ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम 1979, revolution in Iran। So Iranian revolution is challenge to modernization, challenge to westernization। So why Iranians are so particular about hijab? Hijab is not to do with dignity of women, it is all about question of identity, fine, and challenging the westernization, and this is the importance, fine। So this was the first blow, and this is continuously creating problems for US, and this has become so strong, it is like US is shocked. Political Islam's challenge is so big that today Mamdani is the mayor in New York, fine, and that's not something that can be easily digestible, okay, because that's a big change. So what US will do, what they will do, and what is the nature of politics of Mamdani, and what is his real, we don't know, but what is his political positioning? It is something like left, it is something like pro poor and socialism. So ultimately he may give sleepless nights to Trump, who is the symbol of, who himself is a capitalist. And then what the government in USA will do, they would go for polarization, they will attempt polarization, they may do something that can be a trend which divides the American society, that may strengthen anti-immigrant sentiments, etc. ठीक है, तो this is one thing which is very critical. Is this clear? So this happened in 2001. Then the second blow to US hegemony was in 2007 and 8, and that is the global financial crisis. So it impacted the economic status, economic challenge, and the US economy up till now is facing the problem, and it is something like economic depression coming back, though the things are not that bad, but still. And what happened because of economic depression in Germany, we see the rise of fascism. So economic crisis in USA, what we see,
the rise of fascism, sort of fascism there. Fine. So this is another challenge, and this is the time that in 2009 we see the institutionalization of BRICS. So institutionalization of BRICS, at the modest level, you can talk about rise of rest and decline of West. Whose statement is this regarding BRICS? Fareed Zakaria, in his book Post-American World. Okay. So rise of rest, now it is BRICS plus, and today the membership of BRICS has increased, and the most important aspect of world trade is energy trade. And if energy producing countries are in the platform of BRICS, that impacts the hegemony of petrodollar. Fine. So this is a big problem for USA. And at modest level, what we see, BRICS means rise of rest, that includes India also. But actually, there is a huge gap between India and China. India's economy, Chinese economy, somewhere around 19 trillion, and India's economy not even 5, है ना, 4. तो हमारा तो एम है, ठीक है. तो अल्टीमेटली इट इज मोर अबाउट rise of China, and India cannot catch up. Fine. And because BRICS is challenging US hegemony, what we see, US has gone for the war with Russia. It is having the which would have been the most suitable country to start war. If USA had to start war, 3 challenges are there. Obviously, Russia. Why? Because, not socialism, because of least integration of economies of Russia and US. Fine. So, instead of China, there is huge dependency. India and US also has good trade relations. So they will use, wars can be done through different means. Okay. So this is another challenge to US hegemony. And then what happened was, somewhere in 2010, specifically till 2018, but up till now, there is Arab Spring in certain countries of North Africa and Middle East. Fine.
North Africa and Middle East. So in North Africa, you see Libya, Tunisia, in Middle East, the most dramatic episode has been in Syria. So has US won Syria? No. In a way, Turkey or another, like Syria is also an example of the winning of political Islam under Tahir al-Sham group, and US in the mood of reconciliation. Okay, so now Arab Spring is happening where? It is happening in Middle East, and Middle East is very central to global politics. If you want to establish your hegemony, you should be having control over Middle East. And that is why there is a Carter doctrine. Who was Carter? US President Jimmy Carter. And Jimmy Carter was president of USA at the time of Iranian Revolution. So Iranian Revolution happened in 79, and Jimmy Carter gave the doctrine in 1980, and it held that establishment or preservation of US hegemony in the Middle East is USA's core national interest. Fine, means, and it also mentions that USA will go to any extent, including war, to preserve its hegemony here. Okay, so what we are seeing, that the war in Gaza is still not conclusive. So US may want to stop war now. US wants to stop two wars, one in Ukraine, another in Gaza, but USA is constantly failing into that, because the US enemies were never as strong as they are today. So enemy number one, China; enemy number two, Russia. And today what USA want? USA want to focus on Indo-Pacific, South China Sea, and for 2026, Taiwan will be a big issue of the world politics, and Chinese president is determined to integrate Taiwan. So China will ensure that war in Ukraine and Gaza continue. Okay, and this is like the prospective developments, it may happen. So this is another big shock to US hegemony, and this is also the time when we see the rise of China continuously. So again, economic challenge to US hegemony, and things were really bad and out of control when Trump started his first term, and he started then itself the tariff war to prevent the rise of China and to prevent the decline of US hegemony, which Biden tried to do in his own way, but they are not able to really manage the challenge. And the problem is, if you will open many fronts in the battle, then you overstretch yourself. Fine. So actually, USA has got trapped
and there are many battle fronts, and USA is neither able to manage the domestic, things are bad at domestic front, it is also not able to manage the external front. Fine. So since then, we are witnessing what? From here till 2025, we are witnessing a declining superpower making all attempts, all possible attempts, or making a desperate attempts, sometimes going out of their mind, because US is in anger, fine, and anger is your enemy. Fine. So US is in anger mode today, and in anger you take wrong decisions, and the worst decision that USA has taken is how it spoiled relations with India. Okay, so maybe, so what is USA? USA is a declining superpower making desperate attempts to preserve its hegemony. So looking at the entire scenario, the favorite pastime of the experts of international politics is to start making predictions about the future world order. So somebody is saying we will see a bipolar world, but I don't think so, because USA's power has declined considerably and China cannot imitate Russia because China is also having lot of domestic issues. So China will be really so strong that bipolarity is not going to be there, unipolarity out of question, some type of multipolarity is what we can predict, but you don't know, because this is the time when the speed with which changes are taking place are unimaginable. Fine. And a lot of difference has come because of ICT revolution. So what we see that the governments are not too much in a position to control. We have seen at different places like Nepal, etc. So civil society, this type of like Gen Z revolt, different type of developments are happening. So some people also believe that in future it may happen that the idea of polarity as a world order, as a concept, will itself lose the relevance and the world will have no pole. There will be no center. Everything will be very diffused. Everything will be very, very localized. So maybe from the global world, we are entering towards lot of local world. Fine. So there may be local militia, there may be local, everything will go local, and centralization may also collapse. And maybe after 5 years, the students will not be studying the concept of polarity at all. Fine. So most probably, I also think that in time to come, there will be no polarity and all hierarchies will collapse. And ultimately, there will be very localized type of scenario that will emerge. So maybe full circle back to the Greek times and times of city states, something very very local is going to happen. हर इंसान एक लोकल बॉस होगा कोई इस तरीके, क्योंकि मल्टीलेटरलिज्म इज ऑलरेडी
redundant. Ma'am? Yes. Ma'am, just like you mentioned that there are lesser chances of China being the superpower. What are, like you mentioned that there are some internal challenges being going on. Demography is the biggest problem, and China's rise depends upon China's economic growth. So China's economic growth is slowing down. It may not be very drastic. There are problems in Chinese model because India model and China model. So India is more resilient and less vulnerable to external shocks because we have a huge market within the country. But China has gone for export led growth. So China is more vulnerable. So many people believe that China story is also, China will not be US. That is for sure. Fine. Because China does not have that luxury of what was available with US to rise. So US has risen when others were already destroyed. All European powers destroyed. Asian powers were struggling with decolonization. And the only country that was there to manage was USSR, Russia. But today, China has to manage India. And India-China power gap is not that. Matlab we can at least give tough fight to China. And I believe that we can also win. And this is the time because of the change in the warfare technologies. No war will have any decisive winner. ओके तो वॉर भी कैसी हो जाएंगी, लोकलाइज्ड हो जाएंगी. एक फ्रंट पे हम जीत रहे होंगे, उधर फ्रंट पे कोई और जीत रहा होगा. तो अभी अच्छे दिन लोकल जो भैया लोग हैं ना, उनके अच्छे दिन हैं. वो अपने को मतलब कलेक्टर बनने से भी बढ़िया अगर तुम भैया बनो ना कहीं, तो उसका दिन आने वाला है. ठीक है, ऐसे कालीन भैया और ये सब टाइप्स जो होंगे ना, अल्टीमेटली कलेक्टर भी भैया ही है. क्या फर्क है, वो एक पॉलिश्ड भैया है सूट में और वो भैया अपना कुर्ता पैजामे में, बाकी क्या फर्क है. फाइन. तो स्टेट भी एक्सटॉर्शन करता है, वो भी एक्सटॉर्शन करते हैं, वो भी प्रोटेक्शन देते हैं, स्टेट भी प्रोटेक्शन देता है. ठीक है, अब हम फ्रॉम फॉर्मल टू इनफॉर्मल वर्ल्ड में जा रहे हैं. कोई रेवोल्यूशन तो वो सब नहीं अभी. मतलब ये सब तो प्रेडिक्शंस हैं. तुमसे पूछा जाएगा आपको क्या लगता है कहाँ दुनिया जाने वाली है, तो वर्ल्ड इज गोइंग टू बिकम एपोलर, लोकलाइज्ड. बहुत सारा लोकलाइज्ड चीजें होने लग जाएंगी, एरिया होने लग जाएगा. हमेशा ओल्ड रिपीट होता है. जैसे आजकल के लाइफ स्टाइल में फिर पुराने खाने मिलेट विलेट आ रहे हैं, तो यू आर गोइंग बैक टू योर रूट्स. मैम, यस मैम, व्हाई चाइना कैन नॉट बी अमेरिका? व्हाट डिड अमेरिका हैव, आई मीन व्हाट अमेरिका हैड एंड अमेरिका हैड ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड. नो, and in the China terms of ended God, and China made Mao as God. Fine. Whereas Americans, they believe in God. China, अमेरिका के साथ भगवान का आशीर्वाद रहा है. Yes. तो बिस्मार्क का कहना है God take special care of orphans, drunkards and Americans. So Americans are lucky people and Chinese are not, because China has huge population resource ratio, technology, many things will shape. ठीक है, तो अब आगे चलो. अब दो तरीके से पढ़ाई हो सकती है, या तो बच्चों टाइप हो सकती है सिलेबस वाइज,
या समझ वाइज? तो इस क्लास में ऐसे लग नहीं रहा है कि समझ वाइज हो पाएगी। जो लोगों ने आज ही चालू किया है वो तुमको आ रहा है कुछ समझ? इज इट ओके? जैसे ही नहीं समझ में आना है तुरंत बताना है कि Ma'am, अभी what is दिमाग से concept of ऊपर जा रहा है। polarity? फिर यहाँ पे कई लोग हैं जो आलतू फालतू क्वेश्चन पूछ के ऐसे थोड़ा टाइम निपटवा देते हैं। दे आर ऑल्सो वर्किंग विद अस। Ma'am, Okay, so we can always approach them. Yes, where are you? ma'am, concept of polarity. What is polarity? Yes, ma'am. Polarity means distribution of power. फाइन, तो पोल से लो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ से, तो सारा पावर कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है? नॉर्थ और साउथ पोल में। ठीक है, तो ऐसे ही पोलैरिटी के 3 फॉर्मूले अभी तक देखे गए। एक मल्टीपोलैरिटी, सेकंड बाइपोलैरिटी एंड थर्ड यूनिपोलैरिटी। ठीक है, यो यस। Ma'am, what is Arab Spring? Arab Spring was just like in Nepal, there was a protest. So there has been protest in Tunisia and Libya and Syria. You all will have to read paper. Yes. Okay, ma'am. Thank you. Unipolarity means single superpower. Bipolarity means 2 powers. और क्या रह गया था? हेजेमनी। हेजेमनी क्या होता है? हेजेमनी मीन्स मोस्ट पावरफुल पर्सन। यू अंडरस्टैंड हिंदी? नो। ओके, सो यू लुक एट मी, you can understand hegemony, right? So hegemony means unparalleled power, fine, unquestionable power, and in Hindi we call it varchasva. So somebody who controls, जो इंटरनेशनल वर्ल्ड को कंट्रोल करे, वो ग्लोबल हेजेमन है। अब तो हो गया। Ma'am, हाँ, why was political Islam against of modernization or capitalization of West? because West has created havoc in their life. So because they are oil rich region, so they wanted to loot the resources and to have those puppet regimes which work according to the interest of USA rather than the people in these countries. तो वो रिजेंटमेंट स्टार्ट हुआ। और रिजेंटमेंट और कैसे? पॉलिटिकल इस्लाम, 2-3 reasons you can give. Another reason is not way of life, another reason is historical. Fine, there is internal conflict in 3 Abrahamic religions. So this is another reason. And next reason is racism. Fine, so Western world will always show, I want to show myself superior, then I will first try to convince that you are inferior. And politics is shaped by human psychology. तो किसी को भी अच्छा लगता है, you like to make others feel inferior, then you feel superior. तो ह्यूमन साइकोलॉजी से चलती है ना सब चीजें। So that's why Middle East is central to global politics. Middle is central to politics because of its location. It is at the center. और सारा पॉलिटिकल मसाला वहां पर है। ठीक है, रिलीजन है, ऑयल है, मतलब आग लगाना आसान है ना, ऑयल वही अपना लोकल लिया और माचिस लगाया। ठीक है, और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट होती है तो दिलों में आग वैसे ही लग जाती है। तो ऐसा क्या नहीं है ना? तो मिडिल ईस्ट ही तो है वही जबरदस्त हॉट स्पॉट।
ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। सब कुछ है वहां पे, लोकेशन है, ऑयल है, माचिस है, रिलीजन है, एक पॉलिटिक्स के लिए जो कुछ चाहिए सब है, ठीक है। तो सब सब कुछ है वहां, तो वही तो पॉलिटिक्स होगी। अब भाई हो गया इतना इवोल्यूशन। अब पहले दो चीजें, बच्चों टाइप पढ़ाना है या नॉन मतलब मैच्योर टाइप? बच्चों टाइप है, मैच्योर मैच्योर वाले का अंत नहीं है, बच्चों टाइप ही पढ़ेंगे। यस Ma'am, यस। ma'am, when we predict that the coming world would be a world of no polarity and that polarities will lose relevance, how are we arriving at this kind of prediction? Because of the trends which are emerging, means anybody starts protesting anywhere, fine, and protests are going in society and states are not able to control, and the biggest role is of social media. तो सोशल मीडिया हैज प्लेड बिग चेंज। हमेशा वर्ल्ड ऑर्डर जब भी चेंज हुआ तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं वो लीड करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये आपको मिल गया सब कुछ, एक स्टोरी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फेज। First phase, broadly you can call it as Westphalian world order. Westphalian world order. ये वहां मतलब वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा नहीं अभी खत्म हो गया, लेकिन इफ इट वाज एवर इन इट्स आइडियल फॉर्म then it was Westphalian world order. So what are the characteristics of Westphalian world order? First of all, it is regional order. Confined to European nations. Now, if you understand the world history, then from 1648 till First World War and even Second World War, what was happening in Europe? What is the politics of Europe of that time? Civil wars, but civil wars for what? Just like civil war happened in India also towards the dawn of independence. So civil war happened for what? To establish their own states. Fine. So the international politics, what was happening in Europe at that point of time? It was different people were trying to have their own nation states. So it is a politics of nationalism. Is it anything to do like the wars which we have seen in Europe, where, or First World War, is it has anything to do with the aspirations of the people living in Ottoman Empire or Austrian Hungarian Empire to have the nations of their own? And the First World War resulted into the emergence of certain new nations like Czechoslovakia, emergence of Yugoslavia. So from 1648, before 1648 it was Roman Empire. Then new nations started emerging.
So first emerged, let's say, Britain, France, Spain, Portugal, then Italy, then Germany, and then break down in the southern region. So first nation states started emerging in the western part, then in the central Europe, then in the eastern and southeastern part. So the politics of Europe during this time is the politics of nationalism. ठीक है? And if it is a politics of nationalism, so people are fighting for what? They are fighting for their own nation state, and that is why sovereignty will be a key principle of this time. Is this point clear? So अगर एग्जाम में ऐसे आए, वैसे नहीं आएगा, लेकिन what are the salient features of the world order during this phase? ठीक है, तो पहला आपने क्या लिखा? It was regional, ठीक है, और सेकंड क्या है? सेकंड ऐसे लिखो, from 1648 till First World War, European politics can be described as politics of nationalism. Means different ethnic communities aspiring for their own nation states. How is the politics of nationalism? So whenever politics of nationalism happens, what is the outcome of it? Wars. Fine, it always culminates into war. So history of interwar period of Europe is endless wars. Fine, so Germany, France war, Italy, France war, war ही war है, ठीक है. तो पॉलिटिक्स ऑफ नेशनलिज्म है. पॉलिटिक्स ऑफ नेशनलिज्म का मतलब ही क्या है? एरो करके लिखो. Right, it always results into war. So how will you define the history of Europe of this point? What was happening? Wars, Napoleonic war, this war, that war, war ही war हो रही. तो war हो क्यों रही है? Because of nationalism, politics of nationalism. And nationalism is related to what? Capitalism. ठीक है, तो नेशनलिज्म का राइज किसके कारण हुआ? मॉडर्न टाइम्स. और मॉडर्न टाइम्स में आ गया कैपिटलिज्म. तो नेशनलिज्म एंड कैपिटलिज्म, दीज आर टू इंटरलिंक्ड थिंग्स. फाइन, तो यू गो फॉर वॉर फॉर व्हाट? फॉर मार्केट्स, फॉर रिसोर्सेस. सो two things are happening simultaneously in Europe. So from 1648 till First World War, then Second World War, यूरोपियंस ने एक ही काम किया है, वॉर. जंगली जाहिल लोग, लड़ाई तो की है इन्होंने बस. ठीक है, तो ये थोड़ा लोकलाइज्ड थे और ये इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स बन गए. ठीक है, क्यों बन गए? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इंडियन आर्मी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड. ठीक है, इजिप्ट, इंडिया, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया. इन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया. तो यहां तक कैसे आ गया? ठीक है, तो ये
नेशनलिज्म है, ठीक है। अब नेशनलिज्म है लेकिन यहाँ क्या है, कॉलोनाइजेशन है। ये सब तो कॉलोनीज है, ठीक है। तो इनका इनका लिंक है ना ब्रिटेन और इंडिया का। If Britain will go for war, India will have to go for war. So what is the link? Link is that India was the part of British Empire. So what was colonialism? Colonization was actually imperialism. What connected it? Imperialism. So is nationalism linked to imperialism? Fine. So today we have ultra nationalist Chinese president who is claiming its control or its right, its claim over islands in South China Sea. Fine. So nationalism and imperialism are always interlinked things. So why Britain made India as its colony? Why? What was the reason? What led imperialism in Britain? Capitalism. If there had been no capitalism, maybe they would not have come to India. Fine. So imperialism is a phenomena of capitalism. So what they have to do? What is capitalism? Capitalism is a system which is driven by profit. So industrial revolution in Britain happened in 18th century, and before 18th century the center of gravity of world economy was in Asia, China, India, Ottoman Empire, Persia, okay. So what they will have to do, they will have to destroy our economy, and then they will go for, why they will come to India in search of new markets and search of new resources. And not only they will take the resources, they will create market. Their market will come when our own market gets destroyed. Fine. So what they will do, they will destroy our destruction of Indian handicrafts, destruction of Chinese economy was essential for the rise of capitalism of these countries. Fine. So poverty in our countries and prosperity in their countries is interlinked. So they will always want for their they are not bad people, they are good people, they are white people, white skinned people, so they are good people, fine. But for they are not against us, but for their prosperity they will have to keep us weak, fine, because national interest is important, okay. तो अब ये सारी चीजें डोमिनेट कर रही हैं, एक वर्ड से ही दूसरा वर्ड इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो wars are happening, nationalism, you will expand your colonies, then what you will require? Militarism. तो what European countries were doing? बेस में था कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म के लिए चाहिए था इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म
और कॉलोनाइजेशन तो एक ही चीज है, ठीक है। और सारी कॉलोनीज स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका वाज द रीजन फॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फाइन। तो वॉर के लिए क्या चाहिए? नेशनलिज्म और मिलिटरिज्म, ठीक है। और जब वेपन्स हैं तो वॉर होगी होगी। तो यही इनकी हिस्ट्री है। और वॉर में लोगों को जोड़ने के लिए आपको एक सेंटिमेंट चाहिए होता है, नेशनलिज्म। लेकिन अल्टीमेटली आप प्रिजर्व क्या कर रहे हो? कैपिटलिज्म, ठीक है। तो यही इन शॉर्ट स्टोरी ऑफ वेस्टफेलियन सिस्टम है, फाइन। तो अब व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल इन वेस्टफेलिया? national interest, because nationalism is what? Emotional concept. So why people will go for war? Not for market, but for nationalism, for patriotism. ठीक है। तो अब ये कुछ आ गया समझ में या कंफ्यूज हैं आप? पॉलिटिक्स कैसे चलती है या क्या हो रहा था वहां की पॉलिटिक्स, और हिस्ट्री और पॉलिटिक्स का इंटरलिंकेजेस हैं। बिना हिस्ट्री समझे पॉलिटिक्स भी नहीं आती समझ में। तो हिस्ट्री हमारी पॉलिटिक्स की जो समझ है उसको हिस्ट्री वैलिडेट करती है, या हिस्ट्री से हम पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स बनाते हैं। इज दैट क्लियर? तो अब व्हाट इज द डिफाइनिंग प्रिंसिपल ऑफ वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर? नेशनल इंटरेस्ट। ये ऐसे लिखो, लिखो द डिफाइनिंग प्रिंसिपल ऑफ the Westphalian world order is the sanctity of national interest. Sanctity of national interest underline करो। इसका मतलब है belief in supremacy of nationalism. Now, who is the theorist of nationalism? मैकियावेली, ठीक है। अब इसमें लिखो, राइट, द theorist of the prominent theorist of nationalism is Machiavelli. Now Machiavelli's most famous book is The Prince. अभी सुनना है फिर लिखना है। And The Prince is the first book where in political philosophy you get the idea of nation state and the element of nationalism. And his famous statement is, in politics ends justify the means he talks about power politics. So politics of European nations can be understood through Machiavellian lens. What Bismarck has done, what other leaders have been doing. So was not British foreign policy Machiavellian? Fine. But what is the most important contribution? उसने कौन सा टर्म दिया मैकियावेली ने जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, एंड दैट इज रेजोन डी एटाट. Etat is an Italian word for state, reason of the state. And reason of the state in simple terms means national interest. Is it understandable? If I say the politics of Europe from 1648 till 1991
can be analyzed through the lens of nationalism. Fine. And if I say nationalism is always imperialistic, militaristic, and a derivative of capitalism. At least this is what we have observed. Fine. And the First World War was an imperialist war, the war for colonies. Fine. And the scholar of who has theorized about nationalism is Machiavelli. And Machiavelli's principle, he gave the principle raison d'etat, national interest. And you define national interest, the core national interest is preservation of sovereignty. And preservation of sovereignty in most concrete form is territorial integrity. And finally, you will preserve your territorial integrity through militaristic means. Okay? So, what was the, if I describe international politics of this phase in normative sense, what is the word? Westphalian. Norms क्या है? Westphalian है. Norm ये है कि you have to protect territorial integrity at any cost, even at the cost of war. ठीक है, तो हमने अभी कौन सा डिस्क्रिप्शन समझा? नॉर्मेटिव. और नॉर्मेटिव कैसा था? वेस्टफेलियन. वेस्टफेलियन की खास बात क्या है? सॉवरेनिटी, रेजोन डी इटाट. इतना आ गया समझ में? नहीं तो ऐसे नोट करके लिखो. लिखो लिखो. If we want to describe the world order from 1648 till First World War in normative terms, we can call it क्या बोलोगे? वेस्टफेलियन. और रूल क्या है? रूल इज प्रिजर्वेशन ऑफ सॉवरेनिटी, नेशनल इंटरेस्ट, जो भी. ठीक है. अब हम डिस्क्रिप्टिव सेंस में देखें. हाउ वॉज द वर्ल्ड ऑर्डर इन डिस्क्रिप्टिव सेंस इन टर्म्स ऑफ पोलैरिटी. ठीक है. सो हाउ वॉज यूरोप यूनिपोलर? मल्टीपोलर. ठीक है. तो अब लिखो, राइट, द वर्ल्ड ऑर्डर in terms of polarity was multipolar. अंडरलाइन करो मल्टीपोलर. ऐसे लिखो. डेफिनेशन क्या होती है मल्टीपोलर के? Definition of multipolar. When do you say world is multipolar? ठीक है. When, पहले समझो. When world is not unipolar and world is not bipolar. ठीक है. यानी if there are more than two great powers, we call it multipolar. Anything more than two will be multipolar. ठीक है. ऐसे लिखो, राइट. If there are more than two major powers, we call it multipolar. Okay. So अब ऐसे लिखो, what was the scenario in Europe
at that time? लिखो around 5 to 6 major powers. फाइव टू सिक्स मेजर पावर्स. नाम लिखो ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, प्रशिया, बाद में जर्मनी बन गया, प्रशिया, रशिया एंड ऑस्ट्रिया डैश हंगरी. ठीक है. तो अब लिखो ऐसे, हाउ टू डिस्क्राइब पॉलिटिक्स among these countries. ठीक. या एक और ऐसे क्वेश्चन लिखो, what they were doing among themselves. क्या करते क्या थे ये लोग. पहला लिखो. अब लिखो ऐसे लिखो, सिंस द कोर ऑब्जेक्टिव वॉज preservation of sovereignty, they used to go for arms race. ऐसे लिखो, दे यूज टू गो फॉर आर्म्स रेस. आर्म्स रेस को फर्स्ट कर दो, 1. सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ अलायंसेस. ठीक है. एंड थर्ड, वॉर्स. सबको ब्रैकेट करो. लिखो ये तीनों चीजें क्या हैं. ठीक है. ये क्या शो करती हैं. रीड, राइट, ऑल दीज शो strategies to maintain the balance of power. तो इस यूरोपियन पॉलिटिक्स में फॉरेन पॉलिसीज जो भी कर रहे हैं उसको कैसे डिफाइन करोगे. बैलेंस ऑफ पावर. अब बैलेंस ऑफ पावर अंडरलाइन करके एरो करके लिखो. लिखो, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. फर्स्ट प्रिंसिपल बोलो, फर्स्ट लॉ बोलो. फर्स्ट लॉ ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, या एक वर्ड यूज होता है फर्स्ट मैक्सिम. मैक्सिम मीन्स एज गुड एज नेचुरल लॉ. एज गुड एज नेचुरल लॉ. As good as natural law means can't be ignored. Can't be ignored means common sense. जिसको सोचना ना पड़े, जो अपने आप हो. और अगर कोई ये नहीं कर रहा है तो भाई उसका कुछ नहीं हो सकता. ठीक है. एक कॉमन सेंस है,
फर्स्ट प्रिंसिपल है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, और इसी को जियो पॉलिटिक्स कह सकते हैं। मतलब ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, तो जब फर्स्ट प्रिंसिपल ही पॉलिटिक्स का, इसीलिए इसी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं जियो पॉलिटिक्स। ठीक है। अब और क्या फीचर था उस समय का? पोलैरिटी कैसी थी? मल्टीपोलर। और व्हाट नेशंस वेयर डूइंग? बैलेंसिंग ईच अदर। फाइन। हाउ दे वर बैलेंसिंग? थ्रू द मिलिट्री मीन्स। So balance of power is basically militaristic concept. And how are they going to preserve their sovereignty? Through military means, because there was no other means. So it was age of nationalism. Was there any international body at that time? No. So it was age of nationalism. There was no international organization. There was no international law. There was only one international law, Treaty of Westphalia, and there was no international actor, no multilateralism, only nationalism. ठीक है। तो एक चीज और लिखते हैं, लिखो at that point of time there was no international actor or organization means no multilateralism or internationalism. What will happen when nationalism will reach to extreme? War तो होगा, मतलब multilateralism will collapse. So what is happening today? Do you think we are living in an age of ultra nationalism? Yes? No? तो बाकी लोगों को कुछ क्यों नहीं पता है? तो बाकी तुम अपने आप को अल्ट्रा नेशनलिस्ट समझते हो कि नहीं समझते? वैसे इंडिया में कभी नेशनलिज्म वैसा नहीं रहा है। नेशनलिज्म यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, इंडिया में तो लोग कंफ्यूज रहे हैं। बिकॉज who I am first, I will always struggle with my national and regional identity. So Indians have to decide, are they regional or national people? But around the world there is a rise of ultra nationalism. तो जब अमेरिका में अल्ट्रा नेशनलिज्म है, यूरोप में अल्ट्रा नेशनलिज्म है, राइज ऑफ फासिज्म है, तो जब ये सब होगा तो क्या होगा? मल्टीलेटरलिज्म विल कोलैप्स। ठीक है। तो आर वी लिविंग इन एन एज वेयर मल्टीलेटरलिज्म इज इन क्राइसिस? इज WTO फंक्शनिंग? UN फंक्शनिंग? फाइन। तो ये पैटर्न आ रहा है। ठीक है। तो अब हम आते हैं सेकेंड फेज पे। सेकेंड फेज, फ्लक्स में आ जाओ। इंटर वॉर पीरियड। हमारा अभी का टाइम यही टाइम। ठीक है। मतलब अब जब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी, हमेशा वॉर के बाद क्लैरिटी आती है। ठीक है। तो जब तक थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगी तब तक चीजें फ्लक्स में रहेंगी। तो अगर आपको बहुत स्टेबिलिटी और क्लैरिटी चाहिए तो जल्दी से वॉर करवा के क्लैरिटी ले आओ। क्योंकि अगर नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन लग रहा है, ये किंग है कि वो किंग है, चाइना के साथ रहे कि US के साथ रहे, तो दो दो हाथ करके अपना क्लियरिटी आ जाएगी कि भाई इनके साथ रहे।
ठीक है, तो वर्ल्ड ऑर्डर, फ्यूचर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर विल बिकम क्लियर ओनली आफ्टर वॉर। जैसे कोई बड़ा धमाका हो, या तो कोई हेली कॉमेट गिर जाए, मतलब कुछ जबरदस्त होना चाहिए, फाइन, उसके बिना नहीं होगा। तो दैट इज रिक्वायर्ड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड जो भी है, लेकिन ये जो वॉर परहैप्स will be the last war, and perhaps we will be the last generation on this earth, because we have so much, because whichever war will happen now, if it cannot be restricted locally, then it will be obviously the nuclear war, and the potency of that weapons because of technological development has grown so much that it is all about annihilation of the life on this earth. And if you have money, go to moon, just talk to Elon Musk. वही बचान, मतलब वही सेवियर है, ही इज द नेक्स्ट प्रॉफिट आई बिलीव, राइट। हम तो सोच रहे हैं उसी की कंपनी में चले जाए, तो वही बचा सकता है इंडिया। मतलब अब आप मून में ही बच सकते हो, यहां नहीं बचने का स्कोप ही नहीं है, तो मून इज द नेक्स्ट फ्रंटियर। मार्स तो बहुत दूर है, उतना नहीं, तुम लोग की लाइफ तो, हम लोग का मून में काम चल जाएगा, ठीक है। तो अब आगे हम इंटर वॉर पीरियड में अब क्या चेंज हो रहा है, फ्लक्स हो रहा है, फाइन। तो अब क्या क्या चेंजेस दिख रहे हैं, लिखो, व्हाट चेंजेस वी आर ऑब्जर्विंग। First of all, right, entry of USA in world politics. ठीक है, इसके साथ साथ आप नेक्स्ट लिखो, राइट, बिकॉज ऑफ कोलोनाइजेशन, right, colonies are also integrated. इसका मतलब है, एरो करके लिखो, वर्ल्ड ऑर्डर started becoming international. इंटरनेशनल का मतलब है बियॉन्ड रीजनल, बियॉन्ड रीजनल का मतलब है बियॉन्ड यूरोप। ठीक है, अब लिखो, वाई यूएसए एंटर्ड इनटू यूरोपियन पॉलिटिक्स। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो, उसको समझो, लिखो, व्हाट वाज यूएसएज फॉरेन पॉलिसी अप टिल नाउ। अंडरलाइन करो, यूएसएज फॉरेन पॉलिसी, दिस इज कॉल्ड एज मुनरो डॉक्ट्रिन। Monroe Doctrine. Monroe Doctrine has two elements. ऐसे लिखो, there are two defining elements.
regional hegemony. Second, isolationism. Okay. So what is isolationism? Arrow करके लिखो. लिखो not involving or या not getting involved in European affairs. Oblique outside affairs. दूसरे के पचड़े में नहीं पड़ना है. ठीक है, तो इन्वॉल्व नहीं होना है. क्यों नहीं होना है? हमारा अटेंशन डाइवर्ट होता है ना, अपने काम से काम रखो. दूसरे के पचड़े में पड़ के दो चीजें हो सकती हैं. एक तो आपका अपना काम इम्पैक्ट हो सकता है, इसलिए आप नहीं पढ़ते हैं. आपको अपने ग्रोथ पर फोकस करना है. दूसरा हो सकता है कि पचड़े से निकल नहीं सकते, फाइन, तो फंसता जाता है इंसान. और तीसरा होता है कि जब आप पचड़े में पड़ते हो तो पचड़ा खत्म हो जाता है ना. तो पचड़ा खत्म होना इंपॉर्टेंट नहीं. इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बिकॉज देन what happens, you do not get opportunity to become the problem solver. आपको लीडर बनने की अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है और दूसरा इंसान अपना डेवलपमेंट करने लगता है. तो बेहतर है कि लोगों को लड़ाई करते रहने दो. और लड़ाई में तभी जाओ, घुसो तभी, किसी की लड़ाई में तभी घुसो जब तुम्हारे एंट्री से वो वॉर खत्म होने की संभावना ना हो. अगर आपको लगता है कि मेरी एंट्री से चीजें बिगड़ेंगी तो चले जाओ, है ना. या कब चले जाओ? when you think that things are coming to some resolution, ठीक है, then you enter there and restart. Is this point clear? तो एक तो पचड़े में पड़ गए और सही में चीजें सुधर गई तो ऑब्जेक्टिव डिफीट हो जाता है. नेक्स्ट है उससे निकलना. जो भी काम करो सोच समझ के करो, ठीक है, क्योंकि निकलना मुश्किल हो सकता है. एंड यू नीड टू फोकस ऑन योर ओन डेवलपमेंट. ठीक है, तो दिस इज व्हाट. डू यू लाइक टू इंटरवीन इन द प्रॉब्लम ऑफ अदर्स? yes, just to multiply their problem. ठीक है, तो हमेशा झगड़ा हुआ आपस में सुलझा लो. पुलिस के पास जाना फायदेमंद है नहीं है, और खर्चा हो जाता है ना. तो इससे बढ़िया है कि जाओ नहीं. ओके. और पुलिस वाला भी इंटरेस्ट नहीं लेता है क्योंकि तुम्हारा 1000-10,000 की बातें हैं, वहां उसका करोड़ों की नुकसान हो जाता है. ठीक है, उसका अपना करोड़ों का काम चल रहा है उधर. ठीक है, तुम्हारे 2 टके के झगड़े में. हैव यू अंडरस्टूड दिस? डू यू लाइक एज अ लीडर? सो व्हाट इज यूएसए डूइंग? इज यूएसए ट्राइंग टू end Ukraine war, or the war got prolonged because of USA? And is the war a strategy of USA to prevent the rise of Russia? Fine. So the war is not. What is the purpose of the war? The purpose of the war in Ukraine is
to preserve USA's own hegemony. And in technical word, we can call this strategy, और ये यूएस की strategy को कहते हैं blood letting. तो what USA is doing in Ukraine, blood letting. What USA does in Middle East, blood letting. So power is what? Power is a zero-sum game. Fine. So my power remains the same, but my opponent's power increase. Then also my power decrease. So one way is to increase your power, but at the same time to ensure that other countries' power do not increase. Fine. So USA would have, this is a strategy. So can we call war in Ukraine is an attempt by USA to preserve its hegemony? Okay. So you take a calculation. Sometimes the consequences are as what you think, sometimes they may not be as you think. ठीक है, लेकिन आफ्टर ऑल क्यों की होगी, क्यों स्टार्ट की होगी? हैड देयर बीन नो यूएसए, रशिया वुड हैव एंडेड दिस वॉर विद इन अ वीक. ओके, so this is what is to be understood. So what has been USA's policy? Isolationism, not to intervene in European affairs. ऐसे लिखो, why? क्यों नहीं इंटरवेन करना? Point number 1, right, to remain focused on its own internal development. देखो, for any country's rise, it requires peace. So any country which will be involving itself too much in the world affairs will automatically get impacted. And you must have heard about one phrase, peaceful rise of China. So China has followed the similar model, similar trajectory which USA has adopted. So China went for the model under Deng Xiaoping, which is known as peaceful rise of China. Means China not involving itself in the world affairs and completely focusing on its internal development. So this peaceful rise of China started in 78 at the time of Deng Xiaoping, and it continued till 2014. Because in 2013, Xi Jinping became the president of China, and by that time, China was sufficiently strong, and when he came to power, he started a new approach. So since 2014, China has started playing more active role in the world affairs, and Xi Jinping's, like Deng Xiaoping's idea was peaceful rise. So after you rise, you don't require peace. So once you rise, it becomes important that you destroy peace. Fine. So when Xi Jinping came, so he gave new slogan. That new slogan was China Dream. And what is China Dream? He says that rejuvenation of the Chinese nation. So China is a communist country,
Normally, communism is not linked with nationalism, but today China is in a very nationalistic mode, very jingoistic mode. So during COVID crisis, when the world was criticizing China, China has not taken its criticism uh, in a very decent manner. Rather, Xi Jinping asked Chinese diaspora and Chinese citizens to give the befitting reply. And on social media, they started wolf warrior diplomacy. Find anything you talk about Chinese, they will go for complete, like they will counter it very effectively. Fine. So China's rise, in order to understand rise of China, Chinese strategies, you have to understand the history of rise of USA. Now, why India will not be able to reach that position? Because we don't have peaceful periphery. Fine. China will not let India rise. China will not let India to remain stable in economic sense. And China can play the double game. Means China can maintain bonhomie with India, but China can use its proxy Pakistan to create problems for India. तो इंडिया ये कभी इंडिया वॉन्ट्स आइसोलेशनिज्म बट इंडिया कैन नॉट एफोर्ड. तो इंडिया का राइज कैसे, इंडिया की स्टोरी क्या होगी? इंडियाज स्टोरी विल बी डिफिकल्ट. इट इज नॉट गोइंग टू बी China story, but China story is very much based on US story. But still, US is much blessed as a country. No other country is as blessed as US. So that is why it is said that USA is a very resilient country. It has lot of advantage, geographical advantages, lot many advantages. They have already taken a huge lead है उनके पास. They can bounce back easily. China needs to be appreciated because nobody even imagined that a country like China can reach to such level. So the rise of China is exceptional in the world. Fine. Because never ever in history there is a rise of any country in such a short span of time and across the sectors. So China's story is itself very exceptional story, and we can appreciate the understanding of all these things of Napoleon. So Napoleon, at that point of time when nobody would have even thought about rise of China, Napoleon had held that when China will come out of its slumber, it will astonish the world. Fine. So the rise of China is still, people are guessing what type of hegemon China will be. और चाइना का राइज बहुत एक्सेप्शनल है और इंडिया का राइज नहीं हो पाएगा क्योंकि चाइना और यूएस बहुत दूर थे, लेकिन हमारे जो नेबरहुड है, इसीलिए इफ इंडिया हैज टू राइज, द फर्स्ट थिंग इज नेबरहुड फर्स्ट. How are you going to manage your challenges? And challenges are increasing. So China is more present in Bangladesh. China is more present in Maldives. It is present in other countries, Nepal, Maldives, Sri Lanka. तो इंडिया का राइज नहीं हो पाएगा. अगर होगा तो भगवान की ही मतलब कुछ इच्छा होगी.
कभी हो सकता है, मतलब यू कांट प्रेडिक्ट हिस्ट्री कंप्लीटली, लेकिन वो कंडीशंस नहीं है इंडिया के पास। और राइट नाउ सिचुएशन इज टर्निंग वर्स, इंडियाज प्रॉब्लम्स आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स, और होम ग्रोन प्रॉब्लम नहीं है, दे आर मोर एक्सटर्नल, जैसे इकोनॉमिक और अदर प्रॉब्लम्स जो हैं वो ग्लोबल वॉर्स और इनका भी एक एस्पेक्ट है। तो फिलहाल जो यूएस की पॉलिसी थी, इफ इंडिया हैज टू राइज, इंडिया ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन इट्स इंटरनल डेवलपमेंट, बट कैन इंडिया एफोर्ड टू फोकस and will others let us focus? That is a big question. So every country has risen by giving entire focus on its own development. तो पहली चीज है, US was following the policy of isolationism for its own development. ठीक है, तो यहां पर एक नोट करके लिखो, देखो USA's isolationism is comparable to China's policy. Which policy? Peaceful rise. अब second, why USA was following policy of isolationism? Next लिखो, the second reason USA was following, the second reason USA was following the policy of isolationism was to ensure that European nations become weak, वीक हो जाए। अब लिखो हाउ, कैसे होंगे वीक, लिखो बाय ब्लड लेटिंग, ब्लड लेटिंग, खून ही निकल जाएगा बॉडी से, ठीक है। ब्लड लेटिंग कैसे होगी, लिखो राइट, बाय कीपिंग देम एंगेज्ड इन वॉर्स। ठीक है, सो are whether US and Europe, they are best friends? Is US well-wisher of Europeans? So who is a natural partner for Europe? Not Russia, India. Your neighbor is your natural enemy. ठीक है, तो if Europe has to look, it has to look towards India. India natural partner है, तो we are in the age when we are seriously taking lot of concrete steps to achieve India Europe EU partner strategic partnerships. क्योंकि आज इंडिया से ज्यादा इंडिया को भी यूरोप चाहिए because of US policies, but Europe also needs India to manage the things. ठीक है, तो इंडिया ही एक नेचुरल पार्टनर है, चाइना तो कॉम्पिटिटर है जर्मनी का, रशिया तो थ्रेट है, और यूएस बिगर थ्रेट है, तो यूरोप क्या है, पूरा कंटेन्ड है, तो यूरोप हैज टू लुक टुवर्ड्स इंडिया. So that is why in 2018 they published a strategy paper focusing on India, and we see that in recent time EU leaders are making frequent visits,
and India is also engaging European continent in a big way. Fine. So earlier we don't see too much engagement with European countries beyond Britain, but today we have so much close relations with Meloni. मतलब चीजें बदल रही हैं. So we do have a most eligible bachelor in the world. हाँ, बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं. चलो आगे बढ़ो. चलो आगे बढ़ो, है ना. तो अभी यूरोप, पहले यूरोप का पढ़ना जरूरी नहीं था, और लेकिन अभी इम्पोर्टेंट हो जाता है. ऐसे चेंज होता चला जा रहा है. तो फिलहाल इनको मरने दो, ऐसा उसका कहना था. क्यों? क्योंकि पावर इज अ जीरो सम गेम. ठीक है. और दूसरी यूएस की पॉलिसी क्या थी? रीजनल हेजेमनी. रीजनल हेजेमनी मतलब इन नॉर्थ अमेरिका, सुनना है पहले, इन नॉर्थ अमेरिका एंड इन साउथ अमेरिका. इट इज America, it is USA's sphere of influence, and it will not permit any European power or any outsider. That time European power, but at present China or Russia in its neighborhood. Fine. There USA will actively guard. So when Trump came to power, he started talking about nationalization of Panama Canal, etc., because he started targeting China over that. Fine. तो वही है, USA's main policy has been to maintain regional hegemony. So is there any big change in their policy? Monroe Doctrine and Trump's America First. It's, the foundations are same. ठीक है. तो रीजनल हेजेमनी का मतलब लिखो, यूएस विल नॉट टॉलरेट एनी, उस समय लिटरली यूरोपियन लिखा गया था, लेकिन आज हम उसको एक्सटर्नल बोल सकते हैं, ब्रॉड कर सकते हैं. यूएस विल नॉट टॉलरेट एनी यूरोपियन ऑब्लिक एक्सटर्नल पावर in its backyard. ठीक है. तो ये मोनरो डॉक्ट्रिन है. अब नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो. लिखो, nonetheless USA, nonetheless नीचे लिखो, पैराग्राफ बदल दो. Nonetheless मतलब डॉक्ट्रिन तो इनकी ही थी. Nonetheless USA intervened in First World War. First World War लिखो, कॉमा, when Germany took extreme steps in naval warfare. So some American citizens died, and there was pressure on the government, and US government was not willing to start the war, but under that there is one telegram, Zimmern telegram, and then USA had to intervene reluctantly, but they had to intervene because otherwise Germany had to be stopped, and European nations had become war weary, and war would not have ended without US. It was not about ending the war, it was about defeating Germany, because Germany should not emerge as a potential rival. Fine. So USA had intervened the war.
ओके, अब इसके बाद क्या हो गया, अब लिखो वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ऐसे लिखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कुड एंड ओनली विथ द डिसाइसिव रोल ऑफ यूएसए ठीक है। अब लिखो यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन gave, इन्वर्टेड कॉमास में लिखो, विजन फॉर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, विजन फॉर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। न्यू क्या है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अंडरलाइन करो, न्यू का क्या मतलब हुआ, न्यू का मतलब हुआ पोस्ट वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। तो पोस्ट वेस्टफेलियन, व्हाट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर, सॉवरेनिटी, मतलब नेशनलिज्म। तो यूएस विल शिफ्ट थिंग टुवर्ड्स इंटरनेशनलिज्म, ठीक है, पोस्ट वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ, गोइंग बियॉन्ड सॉवरेनिटी, right? He gave the vision of internationalism. ठीक है। अब ये जो विजन उसने कहां पे दी, इन इज 14 पॉइंट्स स्पीच। अब लिखो, दिस विजन ऑफ वुडरो विल्सन was expressed in his address to US Congress because in USA there was an opposition that we will not muddle in external affairs. So he had to convince the US Congress, US Senate that it is a time we should go for intervening. तो वो एक messaging कर रहा है, but still US Congress didn't allow active role of USA beyond limit. तो कहाँ पे उसने दिया, in US Congress, ठीक है, कॉमा, famously known as 14 points. 14 points. Underline करो 14 points. लिखो right. Out of these 14 points, the most prominent components of the vision were first लिखो, concept of collective security, as an alternative to balance of power. Second point, अब कलेक्टिव सिक्योरिटी है, देन यू नीड एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो सेकंड उसका खास बात क्या हो गया, राइट, विजन ऑफ लीग ऑफ नेशंस,
लिखो, द फर्स्ट इंटरनेशनल पॉलिटिकल बॉडी, फर्स्ट इंटरनेशनल पॉलिटिकल नेचर की बॉडी। ऐसे टेलीकॉम वेलीकॉम वाले थे, लेकिन जो पॉलिटिकल मैटर्स को सॉल्व करें, इंटरनेशनल पॉलिटिकल बॉडी। ठीक है, ये दो चीजें खास हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ, ऐसे लिखो, प्रिंसिपल ऑफ नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो what was happening, if you see the geography of Europe, then we can talk about southern Europe. And this southern Europe is known as Balkans. In Balkan region, you have at present countries like Bosnia, Serbia, Macedonia, Montenegro, etc. Fine. At some point of time, all these countries were together part of Yugoslavia. And this region touches Austria-Hungary. Fine. And Austria-Hungary was at that point of time center of Roman Empire, very weak, मतलब कैथोलिक चर्च। आज घर जाके मैप थोड़ा देखना है अब, ठीक है। और यहीं पर ईस्ट में क्या है, रशिया। रशिया क्या है, रशिया प्रोटेक्टर ऑफ ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च है, ठीक है। तो पॉलिटिक्स में रिलीजन घुसा हुआ है, ठीक है। ये कैथोलिक चर्च को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहीं पर है एक थर्ड पार्टी, बीच में क्या है, बीच में है मेडिटरेनियन सी, ठीक है। और ये जो सदर्न यूरोप है, बोस्निया, सर्बिया, ये सब के रीजन में इन्फ्लुएंस है, यहाँ है इजराइल, पैलेस्टीन, ये सिनाई पेनिनसुला, इजिप्ट, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर सब इजराइल, सीरिया, ये सारे रीजन्स हैं। तो पहले क्या है, ये सब ओटोमान एम्पायर है, ओटोमान्स में जो सबसे प्रोमिनेंट लोग हैं वो टर्क्स हैं, टर्क्स। अब ये मुस्लिम्स हैं,
ओके। और बाल्कन एक रीजन है, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का क्या है, हॉट स्पॉट है। क्यों? क्योंकि हियर यू हैव क्रिश्चियंस, इसमें कैथोलिक्स भी हैं, प्रोटेस्टेंट्स भी हैं, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स भी हैं, और यहीं पर मुस्लिम्स भी हैं, जैसे बॉस्निया हर्जगोविना, ये सारी चीजें। तो पॉलिटिक्स अगर करनी है तो रिलीजन पे आप आसानी से कर लेते हो। तो ये हॉट स्पॉट है। ओके, तो देयर आर पीपल एंड दिस रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है आपको एटलांटिक से, ये कनेक्ट कर रहा है स्वेज, अब है, लेकिन इट इज कनेक्टिंग यू विद इंडियन ओशन, पर्शियन गल्फ। तो ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, अभी भी पॉलिटिक्स यहीं पर है। अब मेडिटरेनियन सी एंड अनदर सी, ब्लैक सी। तो ब्लैक सी के आसपास क्या है, यूक्रेन, जॉर्जिया, और ब्लैक सी और मेडिटरेनियन सी का लिंक है, और बीच में है टर्की, और ये दोनों लिंक होते हैं थ्रू बोसोफोरस स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ डार्डेनलस एंड सी ऑफ मारमारा। फाइन। तो बिल्कुल जहां पॉलिटिक्स होनी चाहिए वहीं हो रही है, और यूक्रेन और इसकी पॉलिटिक्स सब इंटरलिंक्ड है, और पॉलिटिक्स सारी कैपिटलिज्म की पॉलिटिक्स है, ठीक है, ऑयल की पॉलिटिक्स है, ट्रेड की पॉलिटिक्स है, यूएस चाइना राइवलरी है। ओके, तो थोड़ा कल क्या करोगे, मैप बना के कॉपी में चिपका दोगे, डार्डिनलस कहाँ है, सी द पोजीशन ऑफ टर्की, सी द पोजीशन ऑफ यूक्रेन, सी द पोजीशन ऑफ गाजा, कैसे ये दोनों लिंक्ड हैं। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो रहा है, सब एक दूसरे को भड़का रहे, ठीक है, सबको चाहिए आजादी। फाइन। तो यहाँ पे सब पैसा ले रहे, आजादी की बातें चल रही है, कोई इमोशनली भी कर रहा है, कोई लेकिन कर रहे, ठीक है। तो कहीं ऑस्ट्रिया हंगरी को प्रॉब्लम है, कहीं ओटोमान्स को प्रॉब्लम है, और भड़का रहा है रशिया। फाइन, बिकॉज रशिया के लिए दोनों दुश्मन है। तो रशिया क्या करेगा, सर्बियंस एंड रशियंस आर एथनिकली रिलेटेड, स्लैब्स हैं ये लोग, तो रशिया इनके हाथ में दे देगा पिस्तौल। तो रशिया ने पहली पॉलिटिक्स ऑफ टेररिज्म इन मॉडर्न सेंस तो इन्होंने ही स्टार्ट की। तो उसके बाद बॉस्नियन सर्ब, because they are looking for in that Bosnia should not be part of Austria. So he will kill the Prince of Austria and the First World War will start. Fine. So we will discuss this tomorrow. कल आप क्या करोगे? आज कुछ दिक्कत? तो कल एक मैप या तो चिपका लो या बना लो, ब्रॉडली चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, हाँ कल क्लास होगा, ये 1 ही घंटे का प्रोग्राम है, उसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, और थोड़ा कुछ 10-15 क्वेश्चन पूछ लेना, ऐसे नहीं कि अभी IR है तो कुछ भी उल्टे सीधे भी पूछ लेना, लेकिन पूछ लेना, ढूंढ लेना टॉपिक क्या था। हम तो है ना, हम ही तो हैं, क्योंकि सत्या सर है ही नहीं अभी, तो सत्या सर गए कहीं।
उड़ीसा गए, कहीं गए हैं। क्या था वो, कहा गया टॉपिक? फॉरेन पॉलिसी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सारे लोग एक एक क्वेश्चन ढूंढ के रखना सब, और क्या ऐसे लगना चाहिए यूपीएससी स्टूडेंट है। वो कहते हैं जब हम यहाँ आते हैं तो इतना एक्टिव क्राउड, वो फिर तुमको वहां भी बुलाते हैं, डीडी न्यूज में बुलाते हैं।